Hello, beta. Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Okay, beta. The recording is now on. So we are on for the show today. And how are your questions going on, beta? Doubts, queries? Sir, it's okay. No, sir, all good. Sir, Bolo, beta. sir, I need to ask, जैसे for the example in the second match you have to do up to the vertex, so we can do directly by the formula like cos. नेपियर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कहीं भी, मतलब जीसी के लिए भी. Ask again, beta. I didn't get you. सर, जैसे सेकंड मैच में हम वर्टेक्स तक करते थे, तो हमें नेपियर रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. हम डायरेक्टली फॉर्मूला होता था, जैसे उधर पी निकाल लिया 10 लेट से, और इधर वर्टेक्स के लिए cos a इक्वल्स टू sec, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाता था, साइन a इंटू कॉस पी ए जो भी था. तो अब मैं ये पूछ, हाँ सर, मैं जो You just hold on. So that means you were using sine formula there. या कंफर्टेबली, मतलब मेरे को बहुत सही लगता था वर्टेक्स तक. Okay. आफ्टर दैट अब सर मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके आगे कभी किया नहीं है, तो उसमें नेपियर जरूरी है या वो भी फॉर्मूले से हो जाएगा? बेटा, साइन फार्मूला मैंने जानबूझ के आपको नहीं कराया है, बिकॉज साइन फार्मूला में कुछ एक दिक्कत है. ओके, सो दिक्कत क्या है ये मैं बताता हूँ आपको. आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? गेट होल्ड ऑफ योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स. यस सर. मुझे बताओ बेटा, लेट अस कंसिडर ए एंगल ऑफ 130. कैन यू पुट बेटा साइन ऑफ 130 क्या होता है? 0.76604. वेरी गुड. नाउ टेक ए साइन इनवर्स. ओके, 50. तो हमने शुरू किया था 130 से, आंसर आ गया 50. ये क्या चक्कर है? ये तो एक्चुअल में उसलिए कर दिया ना, क्योंकि 0 से 90 है, वैल्यू के बीच में ही लेके जाएगा वो साइन की वैल्यू को. ये तो 130 है, वो तो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए वो वैल्यू वहाँ पे 130 की पॉजिटिव आ गई, वरना वो पॉजिटिव नहीं आती. अगर आप 180 से ऊपर चल जाते हो, माइनस हो जाता थर्ड क्वाड्रेंट में जाके, वैल्यू तो उसके बीच में ही देगा ना सर. Very good. So that basically means for every value of sine theta, there are two options of theta. यस सर. Correct बेटा? या अब जब हम स्फेरिकल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, हमारा एंगल 90 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी. यस सर. तो इसका मतलब जब भी कहीं हम साइन इनवर्स लेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि एंगल छोटा है या बड़ा है. तो ये तो हर चीज हर जने के लिए अप्लाई होगा ना, साइन के लिए, कॉस के लिए भी, सबके लिए. हाँ बेटा, कॉस फॉर्मूला में ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है. आई वुड अच्छा. से 0.1%. ओके ओके सर. कॉस फार्मूला में ये दिक्कत नहीं आती है. इसीलिए मैंने आपको ये कॉस फार्मूला, इवन नेपियर रूल में भी ये दिक्कत आपको बहुत कम आएगी. 1% चांस आई वुड से. That is why sine formula I have not intentionally told you, and I don't recommend using it, because in examination scenario, examination condition, अगर आप इन दोनों में से गलत ऑप्शन पिक कर लो तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है. ओके. cos थीटा के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. For cos theta, you will never get two values of theta. It will only be a single value, whether it is less than 90 or more than 90. Okay. So I don't recommend using sine formula. You should be using the cosine formula and the Napier rule. That is much better. However, if you want to use, you can continue using it, but take care of this better. ओके सर. तो सर वो नेपियर फॉर्मूला जो साइड 90 होती है ना, जिसमें एंगल 90 होता है, दैट आई अंडरस्टैंड. जो साइड 90 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि वो पी माइनस, वो एक बार बताना, वो मेरे समझ में नहीं आया वो वाला. ओके बेटा, अभी करा देते हैं. वी विल रिवाइज इट वंस अगेन फॉर साइड 90. और बताओ बेटा, और क्या क्या डाउट्स आए हैं अभी तक? Okay, so you were able to get intermediate positions, beta?
हाँ सर, ये 6 क्वेश्चन तो हो गए थे, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक 90 था ना एंगल, तो वो तो हो ही गया था, क्योंकि उसके सामने की 2 साइड्स लेके वो वैसे। Very good. So let's first go into the Napier's rule for a right-sided triangle or a 90-degree side triangle. It is also known as a quadrantal triangle. So let me set up the presentation and we will revise it before going ahead. Now, Napier rule is very, very important because as we proceed ahead, see we have covered up great circle sailing now. हम यहाँ से जब आगे जाएंगे, the next topic which we have is composite sailing. Composite sailing में Napier rule extensively use होता है. So the understanding is very, very important. You want me to revise the 90-degree angle also? I will do that also, beta, if you want. No, sir. Okay, all right. So let's then revise the 90-degree side application of the Napier's rule. Just give me a minute. Let us set up the presentation. So beta, we are going to revise the application of Napier's rule for a right-sided triangle that is a 90-degree side. So you see this quadrantal triangle on the screen now. We have the triangle PAP, and in this triangle we see the side AB is a 90-degree side. It is represented by making a rectangle on that side. So you see the rectangle is made. So how do we apply the Napier's rule here? Now, number one, beta, the formulas which were there, they remain the same. So sine of middle part is equal to tangent adjacent, tangent adjacent. Sine of middle part is equal to cos opposite, cos opposite. There is no change in those formulas. The circle is made in perfectly the same way. So you make this circle, it is also known as cartwheel. And in this cartwheel, you make 5 parts. So you can see we have 5 parts, 2 small parts on top and 3 big parts at the bottom. So the cartwheel is made. Now in this cartwheel, we fill up the bottommost part. In the bottommost part, you have to remember that 90 degree comes after the minus sign. In the right angled triangle, this 90 degree was in front of the minus sign and the part of the triangle came later. But in a right sided triangle, the 90 degree comes at the end. The part of the triangle, whichever part comes here, will come in the front. So this is the main difference between 90 degree angle and 90 degree side application. So now in the remaining 2 big parts, we as usual fill up 90 minus and 90 minus. So up to here, any doubt? No sir. Very good. Now beta, identify the 90 degree part in the triangle. In this case, it is side AB, and write down that part on top here. Outside the circle on top, you write down that part. So AB comes on top here. We know side AB is the 90 degree part. Now from AB, in this triangle, you start to move clockwise. By clockwise, I mean move like this.
So when you move clockwise, after side AB, what is the next part of the triangle which comes up? AP. Angle A. Very good. The next part, when you move clockwise from side AB, comes as angle A. Now this angle A is to be filled up here in this particular circle. From AB, in this circle, you start to move clockwise. ट्रायंगल में भी क्लॉकवाइज मूव करना है हमें, और इस सर्कल और कार्टव्हील में भी क्लॉकवाइज मूव करना है हमें. सो आफ्टर ए बी जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है एंगल ए, मूव क्लॉकवाइज एंड द एंगल ए शुड कम हियर. So you have the angle A coming here. Now, which is the next part after angle A? Side PA side. Very good. Yes. So next part after angle A is side PA. So we move clockwise further here in the cartwheel, and what comes here is PA. So you see we have 90 minus PA in this particular part. After PA, as you move clockwise, the next part which comes here is angle P. So in the cartwheel, when we move clockwise, here we have to fill up this angle P. So you have angle P coming in here. After angle P, you move clockwise, you come to side PB, Papa Bravo. In the cartwheel, you move clockwise, and at this particular place, you have side PB, Papa Bravo. After Papa Bravo, the next part which comes is angle B. In the cartwheel, you move clockwise. In this part, you write down angle B. After B, we come back to the 90-degree side. In the cartwheel also, after B, we come back to the 90-degree side. This is how the cartwheel is filled up. So any doubt up to here? तो ये नीचे अपोजिट -90 क्यों आया, जैसे उसमें 90 - T करते थे. ओके बेटा, मेरे मम्मी डैडी ने मेरा नाम सुनील बाबा रख दिया है, सो दैट इज वाई दिस इज P minus ओके 90. ओके, मतलब ऐसे, मतलब फॉर जस्ट अ फॉर्मूला. Yeah, that's right. That's right. There is no reason or explanation behind it. It is basically the application of formula. So that's how it is. Okay, all right. So this was the filling up of the parts. So अब बेटा आगे चलते हैं. Let me show you the application also. As I told you that these formulas. हाँ, बोलो बेटा. सर इस केस में ऐसा हो सकता है कि लाइक अभी तो ये 90 डिग्री साइड और एक एंगल भी 90 डिग्री हो, ऐसा हो सकता है क्या सर किसी केस में? बिल्कुल हो सकता है बेटा. अगर इस ट्रायंगल में एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए, हाँ जी. दैट्स वेरी मच पॉसिबल. दो एंगल भी सर 90 हो सकते हैं, सर तीनों फिर एंगल ऊपर भी अच्छा 90 हो सकते हैं, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल भी 90 हो. अच्छा सर, फिर सर ऊपर की साइड क्या आएगा सर, जैसे इसमें तो ए बी है ना? ओके. अब अगर फिर हाँ बेसिकली योर क्वेश्चन इज कि हाँ अगर जी. हमारी ट्रायंगल में 90 डिग्री के दो पार्ट्स आ जाएं, हाँ जी विच सर. पार्ट वी कीप ऑन टॉप, राइट? यस सर. और सर फिर ये P माइनस 90 भी उसी रिस्पेक्ट से कुछ चेंज होगा ना ये, जैसे अभी तो ये उसके ऑपोजिट साइड जो है दैट इज P माइनस 90 आ रहा है ना ये नहीं बेटा, नीचे? कोई ऑपोजिट साइड नहीं है यहाँ पे. हमने ए बी से क्लॉकवाइज चलना शुरू ठीक किया है था, सर. ट्रायंगल में भी और ठीक है सर. कार्टव्हील में भी, इसलिए यहाँ पे P माइनस 90 आया. ठीक है सर. तो अभी P 90. ए बी के ऑपोजिट है, ए बी P के ऑपोजिट है, बिल्कुल दिमाग में लाना ही नहीं है. ठीक है सर, वो ठीक है. ओके, क्योंकि वो जैसे बनाने वाले ने जैसे इसको P माइनस 90 रखना है, दैट इज ओके सर. अभी ये 90 अगर दो, एक साइड और एक एंगल भी 90 होगा सर, फिर सर? राइट. अब बेटा अगर दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स 90 डिग्रीज आ जाएं, तो भी नेपियर रूल बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होता है. नाउ द डाउट कम्स इज कि हम ऊपर कौन सा पार्ट रखें. यू कैन कीप एनी 90 डिग्री पार्ट ऑन टॉप ऑफ योर चॉइस. आप एंगल को ऊपर रखना चाहो उसे रख सकते हो, आप साइड को ऊपर रखना चाहो आप उसे भी रख सकते हो. बट जो भी पार्ट आप ऊपर रख रहे हो, जिसको भी आपने 90 डिग्री कंसिडर किया है, ये फॉर्मूला जो है कार्टव्हील की फिलिंग अप जो है उसी के अकॉर्डिंगली होगी.
मीन्स अगर साइड 90 फिल की है आपने टॉप पे, तो यहाँ बॉटम पार्ट में पार्ट माइनस 90 आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ टॉप में एंगल 90 को रखा है तो यहाँ पे 90 माइनस पार्ट आएगा। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। ओके, वेरी गुड। अब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि अगर एक से ज़्यादा पार्ट 90 डिग्री हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आप किसी एक पार्ट को यहाँ पे रखो, लेट अस से आपने चूज़ किया, आई टोल्ड यू यू कैन कीप एनी पार्ट ऑफ योर चॉइस ऑन टॉप। आपने चूज़ किया आई वांट टू कीप द साइड ऑन टॉप, और आपने इसको फिलअप कर दिया। नाउ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इन तीनों वाले पार्ट में कहीं पे हमारा 90 डिग्री वाला पार्ट भी आ जाए। सो इन दैट केस यस सर। दीज पार्ट्स, वन ऑफ दीज पार्ट्स, जहाँ पे भी ये 90 डिग्री वाला हमारा सेकेंड पार्ट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ जी राइट सर, हो जाएगा। यस सर। राइट। अब ऐसे केस में कभी कभी एक दिक्कत आ सकती है आपको। वो दिक्कत ये है कि जब यहाँ ज़ीरो हो जाए और आप ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज लगाओ साइन ऑफ मिडल पार्ट वाले, तो आपके किसी केस में ऐसा पॉसिबल है कि यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन मैथमेटिकली वहाँ पे स्टकअप हो जाए। कैसे स्टकअप हो सकती है? इन्फिनिटी जा। हाँ। वैल्यू राइट, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाए कहीं पे, तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा हो जाए, आपने एक पार्ट को यहाँ ऊपर रखा और नीचे कोसाइन सॉरी नेपियर रूल अप्लाई किया एंड द फॉर्मूला गॉट स्टक, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जो भी 90 डिग्री वाला पार्ट ऊपर रखा था उसे उठा देना है और दूसरे पार्ट को ऊपर रख के इसे अप्लाई कर देना है। यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ओके बेटा, अंडरस्टूड? रिपीट करेंगे। ओके बेटा, सर ये मतलब बस वही है कि आइदर वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व, ऑल्दो दोनों सॉल्व कर देंगे। अगर कुछ स्टक हो जाता है तो देन स्किप दैट पार्ट एंड गो टू द अदर साइड, राइट? गो टू द दैट्स अदर राइट, एंगल और द साइड। दैट्स राइट। आप अगर एक से ज़्यादा पार्ट 90 डिग्री है तो किसी भी पार्ट को ऊपर रख के इस कार्टव्हील को फिलअप करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू गेट स्टक एट सम प्लेस बिकॉज ऑफ सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो आपने जो भी पार्ट ऊपर रखा था उसकी जगह पे दूसरे पार्ट को ऊपर रख के इसे दोबारा से अप्लाई कर दो। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इज इट क्लियर नाउ बेटा? यस सर। ओके, ऑल राइट। ओके, अब बेटा जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, एज आई टोल्ड यू, साइन ऑफ द मिडिल पार्ट equal to tangent adjacent part 1 multiplied by tangent adjacent part 2. So to remember it easily, tangent and adjacent, they always go together. The second formula is also same. Sine of middle part is equal to cos opposite part 1 multiplied by cos opposite part 2. Cos and opposite both having sound of O, they go together. So this is the application of Napier rule for a 90-degree side spherical triangle. So is it clear now, beta? Any doubts now? Very good. So आगे चलें बेटा? यस सर। Okay. सर So कल आपने बोला था Napier, इंटरमीडिएट पोजीशन आप आज कराओगे। we didn't do that yesterday. नहीं सर, ये लास्ट था, ये Oh, लास्ट टॉपिक था okay, हमारा। okay, okay, okay. All right. ठीक है बेटा, ठीक है. We will do that. We will do that. मेरे mind में था as if we have done. Not an issue. So we will. We are now comfortable with the Napier's rule application, and we are now comfortable with the calculation of the vertex. So yesterday I अच्छा showed सर, you ये one. हमने ये एक ही उसमें हेमिस्फेयर में करा है, या तो नॉर्थ हेमिस्फेयर या साउथ हेमिस्फेयर। अगर दोनों में जा रहा हो, एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में जा रहा हो एक ग्रेट सर्कल, तो Right. Then it is solved तब भी exactly ये in the same way. सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा ना सर? बिल्कुल बेटा, सेम रहेगा. You want me to show you a example on whiteboard?
हाँ सर, एक एग्जांपल दिखाए थे, दो मतलब एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जाते हुए। ये लो बेटा। So give me two positions, any two positions of your choice. सर 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री ईस्ट टू 170 170 डिग्री ईस्ट, नो 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 80 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट। Very good. 80 east to 170 west. Right beta? जी। Okay. अब सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि हम किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं. So as far as the latitude is concerned, it is quite clear. 10 north to 30 south. Just give me 1 minute beta. ओके तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन चेक कर लें, विच डायरेक्शन वी आर प्रोसीडिंग. So 10 north to 30 south, that means we are moving in the southerly direction, and 80 east to 170 west. Sir, easterly direction. So we are moving easterly. यस सर। Yes, sir. Very good. So we are moving in the easterly direction. Okay. So अब दूसरी चीज आती है बेटा कि which pole should we be taking for making the PAB triangle? South South. pole, sir. Very good. We should be taking the south pole because the southerly latitude is higher latitude. So let's make the PAB triangle. Our pole will be the south pole. And the two positions are going to be like this. Let us say this is my starting position A and this is my destination position B. Now equator is going to come somewhere here like this. मैंने यहाँ better understanding के लिए equator बना दी है. You don't need to make it when you are making your triangles, your diagrams. Just for understanding, I have made the equator here. And now we can join the great circle track. This will be the PAB triangle. So up to here, everything clear, beta? यस सर। Okay. So now in this beta, first of all, we will be calculating the great circle distance, that is AB distance. Then we will calculate angle A and we will calculate angle B. And we will see whether these angles are acute angles or any one of them is obtuse. Right? So in this case, जब आप इसे solve करोगे, आपका अब ये कैसे पता चला ये मुझसे मत पूछना बेटा, because you don't need to know it, you will be solving it. आपका एंगल A हमेशा acute angle आएगा. It will be a acute angle and B could be acute or obtuse. अगर B भी less than 90 आता है, then you know that the vertex will be inside. You can make the vertex at any point between A and B and draw Papa Victor. अगर आपका B angle greater than 90 आ जाता है, if it is greater than 90, then in that case the vertex will lie outside and you will make Papa Victor outside. So which vertex you want to take beta, inside or outside? सर इसमें तो मतलब इनसाइड ले लेते हैं, बट इसमें एक Oh. और डाउट था सर, जैसे इक्वेटर पे जो अगर हमने पोल से इक्वेटर तक हमने वो मेरिडियन मारा तो वो तो 90 डिग्री हो जाएगा ना उसका एंगल? राइट हो जाएगा बेटा. सो इसमें साइड 90 डिग्री होगी या एंगल 90 डिग्री होगा? ओके देखो बेटा, जो इक्वेटर क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पॉइंट. हमें वो चाहिए नहीं ना, हमें वो निकालना है. वो तो सो मैंने बट सिर्फ उसके हेल्प से हम रेफरेंस. बाकी एंगल साइड निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते बेटा.
नहीं निकाल सकते। ओके, नहीं निकाल सकते। बाकी की इंटरमीडिएट चीज़ों के लिए, इंटरमीडिएट पोजीशंस के लिए हमें वर्टेक्स ही चाहिए होगा। ओके। Okay, so just as we have discussed, we will check whether these angles are acute or obtuse. अगर ये दोनों acute होंगे तो vertex inside बनेगा। Let us assume हमारे दोनों angle acute आ गए। So I pick up a suitable point here and mark it as vertex, and I join pole with vertex. So now when I join, I know this angle has to be 90 degrees. We know at the vertex, great circle track is exactly east-west, and the meridian running north-south, they intersect at right angles. So now we have the vertex in our diagram. Now you can pick up any triangle, beta. Papa Alpha Victor, PAV, or Papa Bravo Victor, PBV. Whichever triangle you want, you can pick up and solve for the position of vertex. जी सर, हो जाएगा सर। Right, beta? Okay. Okay. सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जैसे हम लोगों ने जब सेकेंड में पढ़ा तो उस टाइम बोला था लोगों ने कि इंस्ट्रक्टर ने कि जब दोनों लैटिट्यूड डिफरेंट हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सेम लैटिट्यूड हो जाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक वो उसका कंपोजिट में आता है या फिर उसको भी सेम तरीके से, मतलब सेम मेथड से सॉल्व करना है। ओके बेटा, नंबर 1 तो ये है कि प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं। चाहे लैटिट्यूड ऑपोजिट हो, चाहे लैटिट्यूड सेम हो, चाहे ग्रेट सर्कल सेलिंग हो, चाहे कॉम्पोजिट सेलिंग हो, पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो, प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं। हम आंसर किसी भी कंडीशन में आसानी से निकाल लेंगे इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, राइट? यस सर। अब एज आई टोल्ड यू, अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो कुछ भी सिचुएशन होने दो बेटा, ऑपोजिट हेमिस्फीयर में पोजीशन होने दो, सेम लैटिट्यूड पे होने दो, ग्रेट सर्कल सेलिंग या कॉम्पोजिट सेलिंग होने दो, कुछ भी होने दो, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सर एक और चीज़ थी। हाँ बोलो सर बेटा। अगर ये जो ए पोजीशन है हमारी 10 डिग्री नॉर्थ, अगर ये इक्वेटर पे होती तो? ओके, सो यू वांट टू टेक दिस 10 डिग्री नॉर्थ एज 0 डिग्री, राइट? यस सर। ओके, चलो डायग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं बेटा। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो अगर ऐसा हो जाए तो let me erase the track also. तो बेटा a point comes on the equator. So if I want to show the equator would be like this. And अब जो हमारा ट्रैक बनेगा, the great circle track would be like this. ऐसा बन जाएगा बेटा, then we can solve it. हाँ ओके ओके सर, वो 90 तो होगा नहीं तब भी, मैं सोचा था वो 90 हो जाएगा। इस केस में सिर्फ ये साइड 90 होगी, this one, but that doesn't help us much. मतलब सब ये वही वाला केस हो गया जिसमें एंगल भी 90 है हमारे पास वर्टेक्स का, और साइड भी एक 90 है। Right. Now if you look at the Papa Alpha Victor triangle, इसमें दो चीज़ें 90 हो गई, एक तो वर्टेक्स वाला एंगल और एक ये वाली साइड। So this was the case which we discussed in application of Napier rule. Okay. एंड सर ये अगर दोनों लैटिट्यूड सेम है तो कोई भी पोल यूज कर सकते हैं ना फिर हम लोग? अब आप बोल रहे हो कि दोनों लैटिट्यूड सेम है, मींस ए एंड बी आर एट द सेम लैटिट्यूड, राइट? नो सर, मतलब बोथ आर इन डिफरेंट हेमिस्फीयर बट द Okay. वैल्यू इज सेम, लाइक 10 डिग्री साउथ, 10 Okay. डिग्री नॉर्थ। Okay. Right, right. So both are, let us say A is at 30 degree north. That's what you are saying, right? यस सर। So if A is 30 degree north, B is 30 degree south, you can pick up number 1 any of the poles, either south pole or north pole, whichever you want to pick up, it's your choice. You can pick up any one and you can calculate any of the vertex because both the vertex will be equidistant from your track. So आप कोई भी हेमिस्फीयर का vertex calculate कर सकते हो. ओके सर। Okay.
सर एक और डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये लास्ट में जब हम फाइनल कोर्स निकाला, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट के फॉर्म में लिखे या फिर साउथ ईस्ट के फॉर्म में लिखे, तो प्रिंसिपली कोई गलत तो नहीं है ना सर? बेटा जब आप ट्रायंगल से अपना कोर्स निकाल रहे हो तो क्वाड्रेंटल नोटेशन में मत लिखो, पहले 3 फिगर नोटेशन में लिखो, फिर उसको क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट कर लो। ओके सर। सर एक्चुअली वो सेकंड में नॉर्थ ईस्ट फाइनल कोर्स में वो 180 माइनस बी करके करा था, तो वो याद था, तो इसलिए। नो बेटा उसको भूल जाओ, क्योंकि उसमें ना किसी किसी केस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने वो तरीका आपको नहीं बताया, कुछ भी याद करने के लिए भी नहीं बोला, सिर्फ 1 2 3 मेथड आपने याद रखना है और कोर्सेज निकल जाएंगे, 3 फिगर नोटेशन में ही निकलेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैं आपको बता भी देता हूं कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। क्वाड्रेंटल नोटेशन में अगर कोर्सेज निकाले जाएं, नाउ कई बार ऐसा होता है कि आपके ट्रायंगल के एंगल्स 190 से बड़े आ जाते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे केस में आपको क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री पे चेंज होती है। अगर हमारा एंगल लेस देन 90 है फिर तो वो आपको सही क्वाड्रेंट में अपना कोर्स दे देगा, लेकिन अगर आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, देयर कुड बी कंफ्यूजन इन फाइंडिंग द क्वाड्रेंट। So that is why I do not recommend getting the quadrantal course out of the triangle. You first get the 3 figure notation course using 1 2 3, and once you have got your answer you can convert it to quadrantal. सर बोलो बेटा। सर जैसे इस वाले फिगर में ही देख लेते हैं, ए बी को रिवर्स कर देते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन बी की जगह ये जो है ये नीचे साउथ से अपन नॉर्थ में जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब अपन ये क्वाड्रेंटल की बात करें तो इसमें जैसे ये वाला एंगल आएगा तो इसे 180 में से माइनस करेंगे तो अपने पास इधर वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज बेसिकली अ सेकंड कोर्स, ओके है ना। अब ये वाला कोर्स आ गया तो ये अपना वैसे ही साउथ ईस्टर्ली से ही आएगा ना, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना 180 प्लस करना पड़ेगा इसमें। बेटा तुम डायरेक्टली क्यों लेना चाहते हो मुझे ये बताओ पहले। नहीं सर, अब जैसे ये क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कुछ क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो कोर्स था, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन भी, 1 मिनट सर। ओके होल्ड ऑन नाउ, होल्ड ऑन। अब तुम मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया कि इसमें सीधा क्वाड्रेंटल आ जाएगा और कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाओगे? वही मैं हाँ सर, वही मैं कह रहा कर हूँ। पाओगे बेटा, यस और नो, कर पाओगे? हाँ सर। वेरी गुड, देन यू कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेंटल कोर्स। सर दिस इज नॉट फॉर अदर्स बेटा। नहीं सर, व्हाट आई मीन टू आस्क, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो इसका एक्सरसाइज का, हाँ उसमें जो पोजीशन थी वो द शिप वाज मूविंग साउथ वेस्टर्ली ओके and A and B. The B course which was coming, that was the internal angle, and the Q course was coming around 102 ओके internally. ओके तो उसको 180 में से माइनस किया तो 77 आएगा वो, लगभग लगभग आप राइट एक्सटर्नली। राइट तो अब आप इसको डायरेक्टली आप उसको कन्वर्ट करना चाहो तो अपने को 180 में तो प्लस करना ही पड़ेगा इसके लिए। राइट तो ये डायरेक्टली वैसे अगर ये अपना 102 है, इसको आप 180 में से माइनस कर दोगे तो अपना वैसे ही कोर्स आ जाएगा ना सर। you mean to say कि quadrantal course can be found directly from the triangle? यस सर। Very good, go ahead, find. No problem बेटा, yes it can be found. सर इसमें वो मैक्सिमम ऑफ द लैटिट्यूड वाला, जैसे नॉर्थ या साउथ में से जो वो है वो लेके, एंड देन जो आ रहा है ईस्ट वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग करके। बेटा आप अगर ट्रायंगल से सीधा क्वाड्रेंटल कोर्स निकालना चाहते हो, यू वांट टू ट्राई, गो अहेड, फाइंड इट आउट, मैच योर आंसर्स। अगर आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं आ रही है, गो अहेड, कीप ऑन फॉलोइंग इट। अगर आपको उसमें दिक्कत आए और कंफ्यूजन आए तो फिर आप 1 2 3 वाला मेथड यूज कर लेना। ओके नाउ? ओके सर। ओके ग्रेट, और बताओ बेटा।
Okay, no more doubts, beta? All sorted out? Yes, sir. Okay, all right. Okay, so shall we move ahead now? It's already, yeah, 45. Okay. ओके बेटा, सो जो कल वाली हमारी एग्जाम्पल थी उसी एग्जाम्पल से आगे चल सकते हैं हम. We can see what is to be done. Yeah, so let's start off with finding the intermediate positions now. We are very much familiar with calculating the position of the vertex. How to find the latitude, longitude of the vertex. Now we want to see that once the vertex position is known to us, how to use this vertex position to find out intermediate positions of our choice. Okay. Just give me a minute. Let's go to the video. So beta, can you see this triangle now? PAV triangle. This is the question which I gave you yesterday. Yes. Okay. So did you solve it for the vertex beta? Did you get the position of the vertex? Yes, sir. Okay. So then you can match your answers. So you can match your answers beta. This was the position of the vertex for this particular question. So just have a look at the solution. You can match it with your working, and if there are any doubts anywhere, you can ask me beta. Okay, all right. So no doubts up to here. Can we proceed ahead from here beta? Yes, sir. Okay, all right. So once we are able to calculate the position of the vertex, like in this case, we had the initial position here, 10 degrees north, 40 east. The final position was 30 north, 100 east. We calculated the angles of the triangle. One came as acute angle, the other one was a obtuse angle. So we came to know that the vertex is outside, that's number one.
and it is towards the angle which is obtuse. So we made the vertex on the side of Bravo B, and then we solved this external bigger triangle Papa Alpha Victor using the Napier's rule, because we know angle V is always 90 degrees, and we were able to find out the latitude as well as the longitude of the vertex. So lat long of the vertex is available to us now. Now, once the latitude, longitude is available to us, we can use this position, vertex position, to calculate the intermediate positions on board. Now, why are intermediate positions required? You will need them to prepare a great circle passage plan. The great circle track appears as a curved line on the Mercator chart, and we cannot plot that curved line. We don't have any tools. It is not a regular curve which can be plotted with compass or something like that. No tools are there. So what we do is we find intermediate positions and we join them with straight lines on Mercator chart or rumb lines with Mercator charts. So that's why intermediate positions are important to us. Anyone among us has done great circle passage planning, beta? On ACDIS. Okay, on ACDIS. So what was the interval which you chose for intermediate points? And we don't choose any interval. We just put the two positions from Florida क्रॉस करने के बाद सीधे जब इंग्लिश चैनल एंटर करना था तो उसमें कुछ सर्कल बन के आ गया था एंड वी Okay. जस्ट फॉलो अप दैट कोर्स. मतलब उसमें हम कोर्स बार बार चेंज कर रहे थे क्योंकि जैसे जैसे चेंज करना पड़ेगा वो रम लाइन के जैसे, पर जैसे Okay. पैसेज में भी हमने वो डायरेक्ट ही डाला था. So you did not make any waypoints in between, right? नो सर, नो सर. Okay. Now that's possible on a ACDIS because the ACDIS is able to show a great circle track. But if you do it on paper chart, that will not be possible. So anybody did it on paper chart, beta? सर 15 डिग्री का गैप रहता है सर. ACDIS पे भी Okay. स्प्लिट करते हैं सर 10 डिग्री पे. Right. It is always a good idea to split that on a ACDIS also, because if you are having a backup on paper charts, you will only be able to plot that backup passage if the interval is mentioned there. So it's very easy on a ACDIS. You can just feed the interval, like one of you has done it with 15 degrees of D long, right, beta? यस सर. Yes, sir. Now, some of the master or navigating officer may like to do it with 10 degrees of T long. Some like to Yes, do sir, it 10. with, okay, you did it with 10, beta? Yes sir, सर 10 मतलब 10 600 माइल्स 900 माइल्स उस पे डिपेंड करेगा. Okay. Then somebody may like it as interval of 5 degrees also. So whatever is the choice. So it basically comes to, you can say the longitude of A is 40 degree east. So let us say if we take a interval of 10 degrees. So that means we have to find our next waypoint at 50 degrees east meridian. Or in other words, we need to find out where does our great circle track crosses the 50 degree east meridian. The next point after that would be 60 degrees east. Next would be 70 degrees east. Next would be 80, 90, and after that you will reach at your destination, which is at 100 degrees east. So this is one way the intermediate points could be asked to you in the exam. They could give you a particular meridian and they could ask you find out the position where the great circle track crosses this meridian. Now, the second method with which the question can be made is they could give you a particular latitude and they could ask you find out the position where the great circle track crosses that latitude. Let's say, for example, position A is at 10 degrees north. The destination is at 30 degrees north. They want us to find out what is the position at which the great circle track crosses 20 degrees north parallel. So these are the two ways in which intermediate positions can be asked. So with vertex, we can find out intermediate positions in both these cases by applying the Napier's rule.
So we will now see how to apply the Napier rule, use the position of the vertex and find these intermediate positions. But since the first session is almost getting over now, we can do that after the break. So have your break, and I will see you once the break is over. Then we will continue with the intermediate positions. Okay. Okay, sir. Okay, beta.